Hello everyone, I welcome you all to this MOOC on professional communication skills. Today we will be starting with module 1, topic 5, and the lecture number is 1.5. The title of today's lecture is Writing Effective Statements of Purpose, that is, Writing Effective SOPs. I am Dr. Prerna Vanjani, Assistant Professor in Department of Humanities, IIIT Kota, and I'll be your instructor for this module. So let me take you through the ideas that I will be sharing in today's lecture. We will go through the meaning of statements of purpose, why are SOPs written, then what is the main objective of writing such letters. After that, we will look at the elements of an SOP, tips to write excellent SOPs, then what is the format, and then in the end we'll discuss some do's and don'ts that should be taken care of when we are writing SOPs. So coming to the real meaning of this term, statements of purpose. So when we try and find out the real meaning, we can very easily understand that the same term can be used for statement of intent or application essays. So ये इस तरीके के letters होते हैं या इस तरीके के essays होते हैं, to be more precise, जब कोई foreign university में student apply करना चाहता है तब ये इस तरह के letters की need होती है. Foreign universities जब भी अपने एडमिशन प्रोसेस ओपन करते हैं तब उनकी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि कैंडिडेट अपना SOP लिख के प्रेजेंट करे. एंड SOP एक तरीके का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वेदर द स्टूडेंट इज केपेबल और नॉट. सो लेट अस सी व्हाट एन SOP यूजुअली हैज. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एकेडमिक राइटिंग that is like a preface of your objectives and abilities that you want to showcase. So जो SOP का format है वो एक academic writing की तरह होता है जिसमें हम एक candidate के objectives और उसकी क्या desires हैं, वो क्यों किसी particular university में कोई particular course select करना चाहता है, तो उसका क्या main purpose है, इस चीज़ को ये डॉक्यूमेंट करने वाले जो लेटर्स होते हैं उसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं. इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एन एसे दैट इज़ रिटन टू द एडमिशन कमिटी वाइल सीकिंग एडमिशन इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी. सो ये लेटर्स एड्रेस किए जाते हैं एडमिशन कमिटी को पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की. सो जब ये लेटर्स एडमिशन कमिटी के ऑफिशियल्स के पास आते हैं तब ये ऑफिशियल्स इन लेटर्स के थ्रू बहुत इजीली जज कर पाते हैं कि ये कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है क्या ये सीरियसली इस कोर्स को कंप्लीट करने में केपेबल होगा कि नहीं, क्या इसका माइंडसेट प्रॉपरली डिटरमिन्ड है कि नहीं. सो ये सारी डिटेल्स हमें SOP के थ्रू मिल जाती हैं. Moreover, it also shows who you are as a candidate and what has been your background. So how are SOPs different from CVs and resumes or any applications that we write? SOP is different in the manner in which it is written. ये एक essay form में लिखा जाता है जो कि ज़्यादा descriptive होता है. तो person की qualifications, experience and skills तो होती ही हैं इसके अंदर, लेकिन ये इस तरीके से लिखा जाता है जैसे candidate अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है. सो उस तरीके से जब लैंग्वेज कैंडिडेट फ्रेम करता है तो उसकी फीलिंग्स, उसके इंटेंशन, उसका डिटर्मिनेशन, ये सब बहुत ही इजीली कमिटी के ऑफिशियल्स को, जो एडमिशन कमिटी के ऑफिशियल्स होते हैं, उनको ये नज़र में आ जाता है. सो कमिंग फर्दर, व्हाट इज़ द पर्पस? इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट योर ऑब्जेक्टिव्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स. सो how is one person, one candidate writing about his accomplishments and objectives? That becomes the format of an SOP. It also showcases your writing ability and qualifications as well. SOP से हम ये भी जान सकते हैं कि एक पर्सन का क्या कमांड है, कितना कमांड है लैंग्वेज पे, बेसिकली इंग्लिश पे, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज. how
a person is able to express his ideas. So all the writing skills can be easily judged from this kind of a letter. It includes personal information. Now personal information does not here refer to all the details of a person, but only specific information like the interest areas, goals, and also what is the candidate looking for in the future. It does not have a rigid structure. That means ये बिल्कुल ही logged form of letter writing नहीं है, या CV structure में नहीं होता, या resume के structure में नहीं होता. ये लिखा तो ऐसे के फॉर्म में जाता है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स होते हैं, लेकिन हर पैराग्राफ एक पर्टिकुलर आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इट डज नॉट हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर. मूविंग फर्दर, SOPs का लिखने का क्या पर्पस होता है एंड क्यों लिखे जाते हैं. लेट अस लुक एट सम पॉइंट्स. SOPs are written so that essential requirements can be met or can be provided to a foreign university whenever a candidate is seeking enrollment. So जब भी कोई स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दाखिला लेना चाहता है, तब ये इस तरह का डॉक्यूमेंट जिसको हम SOP बोलते हैं, ये एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है. इसके बिना फॉरेन यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स सिलेक्ट नहीं किए जाते या एक्सेप्ट नहीं किए जाते. It also is a deciding factor in choosing the right candidate for a particular course. So just because a foreign university has limited seats, and when candidates are coming to apply, the university wants to make sure that they are giving the seats to the most suitable candidate. So SOP जिस तरीके से बनाया जाता है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स बहुत आसानी से जान लेते हैं कि क्या ये पर्सन केपेबल है, क्या ये पर्सन जो अप्लाई कर रहा है, ये स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, ये इस कोर्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएगा. Only then the candidate is given admission. So in other words we can say SOP is a descriptive introduction of a candidate. वो अपने बारे में पूरा डिस्क्राइब करते हुए बता रहा है. In fact, it is an elaborated perspective of a candidate to officials of a foreign university. अपने बारे में, अपने व्यू पॉइंट्स के बारे में elaborate description होता है, जो कि एक कैंडिडेट खुद अपना SOP बनाता है. Moreover, कैंडिडेट की पर्सनालिटी के बारे में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स इस तरह के लेटर से सामने आते हैं. A person is able to judge. In fact, a foreign university gets a greater opportunity to judge the intention, interest, skills, capabilities, and personality of a candidate seeking admission in a foreign land. So, एक ही लेटर में से इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जा सकती है, जस्ट बिकॉज इस लेटर के काफ़ी बारीक पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे नुआंसेस हैं लैंग्वेज में, जो कि फॉरेन ऑफिशियल्स बहुत अच्छी तरीके से जान लेते हैं जब भी कोई पर्सन इस तरह का लेटर लिख रहा होता है. नाउ कमिंग टू द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. So after understanding why SOPs are written, let us look at some objectives of SOP. So here objective of SOP is from the point of view why it is important for a student, for a candidate. And when we were doing why an SOP is written, this is why this official document is written. So this is for the purpose of official work, where admission committee members of a foreign university are checking or judging the candidature of a student. So let me take you to the slide where we will discuss main objectives of statement of purpose. So एक student के लिए statement of purpose लिखना क्यों important है? ये इसलिए important है because इस academic writing document से स्टूडेंट की राइटिंग स्किल्स के बारे में क्लियरली पता चल सकता है. क्या उसकी वोकैबुलरी है, क्या उसकी ग्रामर पे कमांड है, कितना कॉम्पिटेंसी है उसके पास लैंग्वेज की. तो जब हम यहाँ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंग्लिश को यूज़ करते हुए
अपने आइडियाज़ एंड अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं in a professional setting. So students should be very clear about writing their statements of purpose because they are being judged on their writing skills. Then इस तरीके की राइटिंग से उनका डिटर्मिनेशन एंड एम्बिशन भी बहुत क्लियरली नज़र आता है बिकॉज वो उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करेंगे असर्टिव या कॉन्फिडेंट या बहुत ही कन्विंसिंग लैंग्वेज. So objective of statement of purpose is also how unique your personality is. This can also be very clearly judged. Then another thing that the purpose, the SOP is telling us is your expanse of knowledge, your skills and your experience. It also tells what motivates a candidate to fulfill his dreams. Then along with this, what can be your contribution to the university or college? So your contribution to the university means the foreign university where a candidate is applying, the university is interested to know what has been your experience. Your contribution in the foreign university would be in the sense that your past experience will be considered, and that experience, will there be any value addition to the course or to the university? That is what the officials would be looking into. So this particular point, what can be your contribution to the university, means suppose आपने कोई leadership skills हासिल करी हैं और आपने कहीं पास्ट में अपने स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में आपने कोई एक्टिविटीज़ होल्ड करी जिसके अंदर आपकी लीडरशिप स्किल्स सामने आई. उसी तरीके से क्या आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में भी जब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए कि जहाँ पे दूसरों की भी लर्निंग हो. सो सम काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट द यूनिवर्सिटी इज़ लुकिंग फ्रॉम यू. सो इज़ देयर एनीथिंग दैट यू can add on to the experience of the college or the university? That is the main objective which this particular letter can suggest. Moving further, to make your SOP stand out from a pile of thousands of admission applications, it should contain all these elements. So ये सारे elements ऐसे हैं जो किसी भी SOP में होने बहुत ज़रूरी हैं. Let us have a look at them. सबसे पहले है introduction. So here introduction is your introduction. What is your name and what are your strengths, key strengths, what kind of a person you are, a little bit about yourself. You should start your SOP with this. Then the background means what has been your upbringing like, from what kind of a family or who are your members in the family. A little bit of background you can just talk about here. Also from which background stream you are. Okay, so are you from arts, you from science? So you have to tell about your experience and your personal, a little bit of the personal details. Then the third point here is the choice of the course, why you are choosing a particular kind of course, and what is it that you are looking forward to when you study in a particular university. इसके साथ ही करियर गोल्स या करियर इंटरेस्ट क्या हैं आपको, इसको भी क्लियरली आपको सजेस्ट करना है अपने SOP में. इसके साथ साथ एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स. देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन्ड. सपोज़ आप ग्रेजुएशन करके आप मास्टर्स करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो अभी तक आपके पास क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्या इंटर्नशिप्स है, ये सारा डिटेल आपको SOP में सजेस्ट करना है. दो इसका फॉर्मेट एक CV या रिज्यूमे के जैसा नहीं है, एसे फॉर्म में है. सो पर्टिकुलर पैराग्राफ्स में हर डिफरेंट थॉट को डिफरेंट पैराग्राफ में लिखना है. Justifying your choice of university. Yes, this becomes an important element because the university wants to know why you're coming to a foreign land. क्या यही कोर्स आपकी कंट्री में, होम कंट्री में ये नहीं हो रहा है जो आप यहाँ आना चाह रहे हैं? तो जब आप इस पॉइंट को सजेस्ट करेंगे अपने SOP में, तो बहुत ही कन्विंसिंग आंसर आपको यहाँ देना पड़ेगा. साथ में आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में भी आपके आइडियाज़
SOP में नज़र आएंगे। इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी या आपके माइंडसेट में क्या है ये कॉलेज ऑफिशियल्स बहुत ईजिली जान सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन चैरिटेबल या कम्युनिटी सर्विस वर्क, क्या आप किसी ह्यूमैनिटेरियन वर्क में इन्वॉल्व रहे हैं, इस तरीका का अगर एलिमेंट है आपके एक्सपीरियंस में तो इसको बहुत ही पॉजिटिव एलिमेंट माना जाता है SOP में। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स विच यू शुड इंक्लूड इन योर SOP. Then coming to small tips on writing excellent SOPs. Number one, no doubt, is no spelling or grammar errors. Sentences should be clear, strong and concise, to the point, focused sentences, not very descriptive in the sense that you are using imagination and imaginative words. Avoid cliches and repetitive language. So cliches means जो बहुत ही commonly used phrases हैं उनको avoid करिए. SOP यूनिक होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी से मैच करते हुए आपकी पर्सनालिटी का ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए. इसमें टोन कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव होनी चाहिए. लैंग्वेज नो डाउट फॉर्मल होगी. कीपिंग द टोन पॉजिटिव एंड अवॉइडिंग एनी कंप्लेनिंग एटीट्यूड. सो आपका पर्सनल लाइफ फिलॉसफी क्या है ये नज़र आ जाता है. यूज़ प्रॉपर टेंस. नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेजेंटेशन. इट शुड बी इन अ प्रॉपर अलाइंड फॉर्म. मार्जिन से स्पेस पूरे पेज में छोड़नी चाहिए. इनफैक्ट लाइन स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे. 1.5 की लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए. Then after you have written your SOP, also revise and critique it. Critique it here means you have to show it to one or two people so that they can find out and suggest more suggestions, more corrections in it. Moreover, moving further, what is the format of an SOP? अब broadly इसके अंदर 5 या 6 पैराग्राफ्स होने चाहिए. जो सबसे पहला वाला पैराग्राफ है उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. And this should suggest who you are and what you want to do. So basically it is about your personal details, your background, your goals, and why you are why you are trying to uh, find a course which is not there in your home country. Then paragraph 2 should be, why do you want to take up this course? So there has to be a very convincing and very assertive way of telling why you want to take this course. Then paragraph 3 should talk about what makes you the right candidate for this course. इस particular paragraph में आपको अपनी यूनिकनेस, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हुए कन्विंसिंगली लिखना है कि क्यों आप ही राइट चॉइस हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए. देन paragraph 4 should also be an extension of paragraph 3. क्यों आप राइट चॉइस हैं और आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपनी यूनिकनेस के साथ, आपकी स्किल्स के साथ आप और क्या उस यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको सिलेक्ट किया जाए. And the last paragraph is basically a rounding up where you should be talking about your future goals. कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं और आपका आगे का प्लान क्या है. So coming to the last part of the SOP, some do's and don'ts. So how you should be like beginning. सो आपका जो SOP है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बिगिन होना चाहिए और एक लास्ट में एक इंस्पायरिंग एंडिंग होनी चाहिए. सो यूज़ ओरिजिनल वर्ड्स, क्लियर लैंग्वेज विद एक्टिव वर्ब्स. इट शुड हाईलाइट योर स्ट्रेंथ्स, एकेडमिक बैकग्राउंड, रिसर्च एरिया, इंटरेस्ट एंड फ्यूचर गोल्स. सो ये सारा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्म में सजेस्ट होना चाहिए SOP में. अलॉन्ग विद दिस यू शुड शेयर योर पर्पस ऑफ एजुकेशन. अभी तक आपने जो एजुकेशन गेन करी है पास्ट में या अभी कर रहे हैं और आप आगे क्या करना चाहते हैं इसका भी एक लिंकिंग सेंटेंस होना चाहिए. व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन, इसको ज़रूर लिखिए. अगर आप आते हैं यूनिवर्सिटी में, सिलेक्ट किए जाते हैं तो आप क्या लेकर आ रहे हैं, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल. सो व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन, दैट बिकम्स
that becomes an important element of making your SOP stand out from the rest of the SOPs. Always provide facts, reasons and examples. सपोज आप कह रहे हैं कि मैंने ये एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उसका आपको फैक्चुअल ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा कि यस मैंने ये करा, इससे मेरी ये स्किल्स इम्प्रूव हुई. एंड in the end you should be conveying all this in a very positive and confident manner. Now let us look at some of the don'ts. So what you should actually avoid in an SOP is that you should not make it too lengthy. हर SOP लिखने के साथ हर यूनिवर्सिटी एक आपको वर्ड लिमिट देती है, जैसे 2000 वर्ड्स या 3000 वर्ड्स. तो जो भी ये वर्ड लिमिट दी गई है उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए. साथ में हर यूनिवर्सिटी का पर्पस ऑफ एजुकेशन अलग है, तो हर यूनिवर्सिटी के लिए आप अपने SOP को एवरी टाइम बनाएं. इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सो नो नीड फॉर टू पर्सनल डिटेल्स टू बी एडेड. ऑल्सो अवॉइड योर SOP टू अपीयर वेग और मीनिंगलेस, राइट? Another important thing is never give wrong or false information. Moreover, अपने scores को भी बहुत ज़्यादा highlight ना करिए, because this is your past achievement. Now what you're looking towards in the future, that becomes important. So this brings us to the end of our module 5, which is about writing effective SOPs, and I hope you have understood how to make efficient SOPs. All right, so thank you everyone.